Thank you very much for having me. अच्छा ग्लूकोज लगा के आए हैं, ड्रिप लगा के आए हुए, क्यों इतना ये वाला क्यों? He's such a cute boy, you know. I really like Pakistan. Handsome men, you know, very nice. I like it here. This is not the thing. It's the thing. It's not the thing. I know what thing this is. Your thing is smaller. Oh no. Artist जिसके साथ मैं काम करना चाहता हूँ. Thinking this while we were doing the interview. I'd love to work with you. Voice acting in channel. Yes. What's up? And the legend. Actually. एक आदत जो मेरी सबसे बुरी है. मुझे तो आपकी कोई आदत ऐसी बुरी नहीं लगती. मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ. मैंने तो अभी तक नहीं आप अपनी बताओ. मैं अपनी बता. Yes. अच्छा मैं आपकी तारीफ. लियोनार्डो डिकैप्रियो वाली हरकत जो आप करते हैं. नहीं. Oh no. Everybody knows. No, what is up? Nobody knows. You know. Don't need to tell others. What I want my legacy to be. That I was a good person. अच्छा मैं डांसर कहना. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम है Dino Ali. मेरा नाम उस्मान रियाज है. And you can watch us on Excuse Me with Ahmad Ali Butt बहुत जल्द. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है and welcome to yet another episode of Excuse Me. भाईजान जीनियस आपको पता है क्या होता है? मैं नहीं, मगर जीनियस वो होता है कि जो हैज़ टू पे अ वेरी हैवी प्राइस ऑफ वर्किंग और एडजस्टिंग हिमसेल्फ टू मीडियोक्रिटी. बिकॉज जब आप जीनियस होते हैं ना, आपके इर्द गिर्द सारे जो होते हैं वो आपके लेवल के नहीं होते हैं. कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एट टाइम्स. हमारे जो आज के मेहमान हैं, ही इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट. बिकॉज बहुत कम उम्र में म्यूज़िक के साथ साथ हैंड ड्रॉन एनिमेशन के साथ साथ म्यूज़िक कॉम्पोजिशन, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, और फिर उन्होंने कहा कि यार मैं एक फ़िल्म बनाता हूँ जिसमें हुमायूं सईद नहीं लूँगा, मैं एनिमेशन के साथ मैं बनाऊँगा. तो ये एक निशानी होती है उस बंदे की जो कि वांट टू अचीव मोर देन हिज लिमिट्स आर. बट 9 साल के अंदर मौला जट बनी थी. इन्होंने भी कहा कि मैं भी कोई 8-9 साल लगा के एक फ़िल्म बनाऊँगा. आज हमारे शो पे आए हुए हैं. आई वॉन्टेड टू आस्क हिम एंड इट्स अ प्लेजर टू हैव हिम बिकॉज इनकी अभी तक मैंने फ़िल्म नहीं देखी. वो भी क्यों नहीं देखी मैं आपको बताता हूँ. लेकिन प्लीज़ वेलकम द क्रिएटर ऑफ ग्लासवर्कर मिस्टर उस्मान रियाज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. Thank you very much for having me. थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट. अच्छा ग्लूकोज लगा के आए हैं, ड्रिप लगा के आए हुए, क्यों इतना ये वाला क्यों? पता नहीं. मैंने कहा ना प्राइस ऑफ जीनियस. द फर्स्ट क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क यू. मैंने अपने बेटे को कहा यार आओ ग्लास वर्कर देखते हैं, और हम लोग उस वक्त देख रहे थे. एक फिल्म थी हम लोग देखी थी इनसाइड आउट 2. तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार ग्लास वर्कर भी देखनी है. तो उसने कहा नहीं बाबा. मैंने कहा नहीं इट्स अ पाकिस्तानी फिल्म. तो कहते बाबा दे डोंट लुक पाकिस्तानी. ये उसका पहला सवाल था. मुझे एकदम रियलाइज हुआ. मैंने कहा हाँ, वाई डोंट द ग्लास वर्कर, जो कि एक पाकिस्तानी ने इंसेप्शन से क्रिएशन और उसके एग्जीक्यूशन तक लेके आया, उसमें पाकिस्तानी क्यों नहीं लग रहे लोग? रेसिस्ट. तो अगर आप एनिमेशन की एस्थेटिक्स देखें, और स्पेसिफिकली जापानीज एनिमेशन, जो एनिमे का जो जॉनरा है, उसमें अगर आप कैरेक्टर डिज़ाइंस को देखेंगे, दे डोंट लुक जापानीज आइदर. देयर इज अ काइंड ऑफ जेनेरिक लुक दैट द कैरेक्टर्स हैव विद देयर big eyes and small noses. References are there. Yes. Okay. So the Japanese aspects of those, if there's a show or if it's a movie, even if you take the Studio Ghibli movies, the way the characters dress and the environment that the characters are in, the suspension of disbelief in that medium allows you to accept that okay, they're Japanese or they're European or wherever the show or movie is based. तो इस फिल्म के साथ हमने उसी एस्थेटिक से इंस्पायर होके अपने कैरेक्टर डिज़ाइंस बनाए. और उसमें यस वी हैव अ विंसेंट, वी हैव एन अलीज, बट वी आल्सो हैव अ नादिया, वी हैव मलिक, वी हैव. नहीं मेरे मालिक का विंसेंट था. मतलब विंसेंट नाम किस पाकिस्तानी का होगा? विंसेंट पाकिस्तानी का नाम नहीं है. वो तो किसी ने कहा नहीं कि यार उस्मान बिल्ली आंखें किसी की भी नहीं है. मतलब किसी ने कहा नहीं कि भाई ब्लू आइज हमारी तो होती नहीं, हमारी तो वो है नहीं होती है, बट ऑडियंस का वो नहीं आ जाएगा कि यार we can't relate to it. See, I wanted to make an impact in the global animation space. Okay. I wanted to take something that viewers are familiar with, especially animation viewers for the anime genre. Take that and apply the Pakistani elements to that aesthetic.
and then make something that international audiences can see and also Pakistani audiences can see. And when you do go watch the film, the way the characters are behaving, और अगर आप उर्दू version specifically देख रहे हैं तो जिस तरह का dialogue हमने लिखा है और जो environments है film में, जैसे एम्प्रेस मार्केट से बहुत इंस्पिरेशन ली. इट्स वेरी कैनोलियन. वो आपका जो प्री वॉर वाला एरा था आपने वो वाला दिखाया है. यस. व्हाई वॉर एज अ बैकड्रॉप? द वर्ल्ड चेंज्ड आफ्टर 9/11 and I grew up in that time. Obviously we didn't go through the things that were happening in the countries around us, but एक underlying tension थी जब आप बड़े हो रहे थे कि दुनिया में क्या हो रहा है. और जो जंग जो दुनिया में जो एक शुरू हो गई थी, it really affected my childhood and the people who I was growing up around in school. लेकिन जब हम बड़े हो रहे थे, we didn't really think about it that much. It just was a mental switch. एक base level anxiety आ गई थी कि हम अलग हैं, we're different, which the world wasn't like that before. I wanted to capture that feeling in this film and talk about, because the film is an anti-war film. Yeah. The film is about how the atrocities of war, how they affect people. And ultimately, it's the people who suffer, regardless of whoever the victor is. But I didn't want to be preachy about it. And I also wanted to explore the ideas of art in wartime. What is the significance of art? What is the significance of all of these things, these creative pursuits that we do when the world is falling apart around us? But the themes in the film, they tackle these things, but I tried to do it in a subtle way. ताकि अगर आपको सिर्फ एक मूवी देखनी है about a glass worker and expanding his creative powers and learning from the things around him, वो भी है film में. It's about a relationship between two characters, both whom are artists. एक Vincent है जो एक apprentice glass blower है, learning from his father in their glass shop. फिर Elise का जो character है, she's a prodigious violinist, struggling to find her own unique voice on the instrument. And as the war is getting worse around them, how their relationship is affected. That's the human aspect of the story. You said that 9/11 changed a lot of things. Where were you at 9/11? I was 9 years old, and I remember watching the news reports, and just, it was a scary time because you didn't know. No, you were in Pakistan. Pakistan mein tha, ji. But you didn't know what was going to happen. And I remember कि अगले दिन स्कूल पे भी छुट्टी मिल गई थी. And just this base level of anxiety in all of the adults around me. I wasn't old enough to understand what was happening. But everything changed after that. And how my childhood was affected, how other people around me were affected. We still found reasons to keep living, keep moving forward. But it changed everybody as people. You knew that you were different just because of where you were from, especially in this part of the world. But again, tackling that in a very subtle way. If you don't want to see that in the film, you don't have to see that. You started music at a very early age. आपने almost मेरे ख्याल है interviews में भी कहा कि music was the first inspiration in your upbringing. वालिद साहब या अम्मा की तरफ से कहाँ से आया ये? So both music and drawing I'd been doing since I was small. I've been drawing. Family में थी inspiration? जी. So I'd been drawing since I could hold a pencil, and I've been playing music because everyone in my family played music. Zia Moyuddin, मैं उनको दादा मामू कहता हूँ, but he was my mother's brother. So there was a lot of just Urdu literature and poetry in our household. और फिर मौसीकी की महफिलें भी बहुत होती थी हमारे घर में. तो ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक इज़ हाउ I didn't start on the piano. मैं पहले हारमोनियम पे बजाता था. And my grandmother, who was a musician, she saw that there's a talent here to pursue, and she convinced my family कि इसको पियानो सिखाएं क्योंकि फिर वो अपनी म्यूजिक लिख सकेगा. कंपोज कर सकता. तो इसलिए मैंने फिर पियानो शुरू किया बचपन में. And drawing is from my mother's side. My mother is an artist. Her sister is an artist. My khala, a fine artist. तो drawing में उनके साथ बैठ के बचपन से मतलब sketching और still life करता रहता था. So there was always these two aspects of my upbringing. And then there's a lot of actors in my family as well. Ahmad Riaz, my father, अगर आपने mystery theater देखा था तो PTV पे जो आता तो he was the ghost in mystery theater. और खालिद अनम का जो गाना है पीरा हो, उस पे भी वो थे. और फिर ग्रिप्स थिएटर ग्रुप. मतलब कीड़ा है फिर? मतलब जी कीड़ा है सर, कीड़ा तो I grew up in an environment like that, and
I never thought बड़े होके कि मैं एक फिल्म बनाऊंगा, वो तो मैं कभी भी नहीं सोच रहा था. I just loved pursuing these things. अच्छा, हमारे यहाँ होता है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, हेलिंग फ्रॉम अ फैमिली जहाँ क्रिएटिविटी को सेलिब्रेट किया जाता है, आपको बड़ी एक फ्रीडम मिलती है, आपकी सोच भी. तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा जी ये एक्टिंग में ही आएगा और ये या मतलब मेन सिंगर बनेगा एंड ऑल दैट. कॉम्पोजिशन, डायरेक्शन, ये सारी बिहाइंड द सीन्स वाली चीज़ें हैं. यू आर मोर शाय ग्रोइंग अप के, बिकॉज आई हैव सीन योर इंटरव्यूज, यू हार्डली मेक आई कॉन्टैक्ट. सो ये मतलब दिस इज द पहली दफा. बचपन में इसकी ब्राउन आंखें हैं बाय द वे. बचपन में मेरे लिए बहुत मुश्किल था. नाउ आई फील आई एम मच मोर कंफर्टेबल. बट टू आंसर दैट क्वेश्चन, आई नेवर फेल्ट अनकंफर्टेबल ऑन स्टेज. या It was the human interactions where I felt uncomfortable. But अगर मुझे स्टेज पे बिठा दें, अगर मुझे म्यूजिक बजानी है, या क्योंकि TED प्लेटफॉर्म पे you have to go and you have to address 300-400 people at the TED theater, I always felt comfortable there because I had a set script. I knew exactly what I needed to say और मैं अपने काम के बारे में बात कर रहा हूँ. So I was never shy when it came to work. But yeah, like Dino remembers me. Dino was actually the first person who gave me Dino Ali. Who's right? Doesn't ring a bell. But he remembers when I was extremely shy. The first time I performed on Pakistani TV was on his show. So he remembers my phase back then where I was extremely uncomfortable. But again, when I would perform... Is he a Moroccan dancer? Dino is a great Moroccan dancer. He's an amazing Moroccan dancer. Acha, coming back to that, you know, I used to stammer. मैं अभी भी stammer करता हूँ. Theatre was the saving grace because when I started, मैं स्कूल के थिएटर पे परफॉर्म करता था और मैं बिल्कुल स्टैमर नहीं करता था. So it was an invincible blanket जो कि आपको आप स्टेज पे आते हैं ना, तो you feel like कि oh I'm Superman, कि this is my alter ego that takes over, and it's a proven fact also. So hence मतलब people like me and you were very much comfortable on stage. Yeah, I completely agree. Let's talk about the funding of this project, because Glassworker took 9 years almost. So 9 साल के अंदर, और वो भी hand drawn. जब आप computers आ गए, animation आ गई, everything is AI generate किया आपने और ख़त्म हो गया, तो आपने 9 साल क्यों ये काम किया? The film actually took 10 years. मैंने 2014 में जो initial sketches और story treatment थी, वो मैंने उस वक्त शुरू की थी. And I didn't know how difficult it would be when I first started. So you remember the first scene that you drew? Yes, I remember. The film, the way it is now, is almost exactly how it was when I started the project. So it has evolved, and with all the international talent that came on board, we kept improving it and refining it. But in the initial story, everything that I had written, all the musical cues that I had written, जब मैं ड्रॉ करता था, मैं अपनी टेबल पे, मैं पहले तो डिजिटली ड्रॉ भी नहीं करता था, मैं सिर्फ कागज़ पे सब कुछ बना रहा था. तो I had my table here and my piano behind me. I would draw something, then I would turn around and I would write music for the film. And then that would inspire a visual, then I would turn around and draw on my table. Visually also? I think very visually. So dialogues वगैरह मैं उसके बारे में सोच नहीं रहा था. I was just in the animation space and in the film development world, this stage is called image boards. Yeah. So I just kept drawing image boards of the film. And then I started storyboarding it without a team around me, just planning what I wanted it to be like. फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ बढ़ती गई. And then if I were to talk about the process of making the film took 4 years to make. 2014 till about 2019, it was preparing the infrastructure, getting our production pipelines ready. The studio's run by me. Who's funding it? So I'll get to that. So the studio's run by me, Mariam, and Khizr. Khizr is my cousin. Mariam is my wife. Mariam is the co-founder. She wasn't your wife back then? She wasn't my wife back then. But we've known each other since we were 11, 12. Oh, okay. So we've been working on the film longer than we've been married. So it's amazing. But we got to a point where in 2019, after we did the Kickstarter in 2016, prepared a pilot, I got to show a bit of that to Steven Spielberg, wo TED aaye hue the, TED 2016. So his encouragement actually really, really helped. For him, it was a 20-minute conversation. For me, it changed my life. क्या बात है. For people who don't know who Steven Spielberg is, America का सैयद नूर है. Yes. आगे चलते हैं.
तो 2019 में फुल स्केल प्रोडक्शन हमने शुरू की और 2023 के आई थिंक Q3 Q4 में हमने ख़त्म की थी और फिर उर्दू डब पे काम किया और ये सारी मार्केटिंग और फिल्म फेस्टिवल्स पे फिर वो एक सर्कस शुरू हुआ. In regards to funding, nobody was prepared to finance a project like this in Pakistan. I'm talking about the big studios, and rightly so. क्यों करेंगे? This was a very outlandish idea. The project was financed primarily by my family and our investors in California. And they are also close family friends. और वो भी शुरू में we received funding in batches because everybody was hoping that somebody else would come along and rescue the project and then finance the whole thing. और फिर एक चीज़ हुई थी एक मीटिंग में जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे, when it was tensions rise नहीं कर रही थी लेकिन it was a heated moment, and then I said, look, if we wait for other people to come rescue us and if we don't believe in this ourselves, then why do we deserve to do anything? अगर हम मतलब पाकिस्तान में इस चीज़ को फंड करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर हमें पैसे मिल गए तुझे? और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद पैसे मिल गए. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. मैंने बहुत दुआएं मांगी थी and then we were able to get the necessary financing we needed to finish the project, but it was very very difficult. And मैं ये बोलूँगा, I got to work with an amazing team in Pakistan and an amazing team internationally to bring this whole thing to life, and उनके बगैर ये बिल्कुल भी नहीं बनता. How restless are you? How restless am I? I am very, very restless. I need to keep working. I need to keep doing something. And I feel like if I'm not doing something, I'm not progressing. तो एक और वो भी है क्योंकि बचपन से मेरे पियानो टीचर और आर्ट टीचर्स ने मुझे ये आई थिंक ये एक आदत डाल दी थी कि keep practicing, keep working towards improvement. And I need to grow out of that because a lot of practice isn't great either. It should be qualitative practice as opposed to quantitative. So I'm trying to get out of that. And also you can't make things without living life and experiencing things. So living life is as important as working. But I'm trying very, very hard to break out of that. Matlab you do, I'm sure every person knows that they're crazy at some level. And I think you know very well how crazy you are. Your anchor is your wife. How has she managed to tame you and all of this? So she's also a very creative person. Yeah. I've sometimes seen the BTS. Sometimes there's not a clash of egos, but it's just we're both so engrossed in the work we're doing. Sometimes it gets a bit overwhelming, but she is the anchor in the sense that she constantly reminds me, in order to make things, you have to live life. And I'm very grateful for that. Like what I was saying earlier is her thought process. And also my family is my anchor as well. My parents, I'm very, very grateful, have been extremely supportive. I dropped out of 2 colleges to pursue this. I was in Indus Valley School of Art first. मैंने उधर 2 साल किए थे. ड्रॉप आउट हो गया. और फिर मैं टेड के लिए सेलेक्ट हुआ. लेकिन इंडस पे मैंने बहुत कुछ सीखा था. इट वाजंट जस्ट बिकॉज देयर फाउंडेशन ईयर में वो इतनी सारी चीज़ें करवाते हैं. एंड आई वाज ऑलरेडी डूइंग आर्ट, सो डूइंग things like architecture, doing a lot of fine art studies really helped refine my skill set for the storyboarding phase for the Glassworker. I drew the whole film. I storyboarded the entire movie. So there's some skills I picked out that I'm genuinely grateful for. But then TED happened. And when I went for TED, that opened up this whole other world for me. And I was invited to speak at conferences all over the world for over a year. So I went to Indus and said, I'm going to leave and I'm going to go on this crazy adventure. Or they obviously didn't want me to do that, but I felt so strongly that I have to do this. I embarked on that, and then I wound up at Berklee College of Music. I spoke at a Google conference in Boston. The Dean of Admissions was there. He invited me to the school and I got a full scholarship, alhamdulillah. And I was there for 2 years. I recorded my orchestral pieces there. And then I was invited to Japan. And then the animation really started picking up because that was always the dream, to do hand-drawn animation. And then I was at a crossroads because at one point I was going to Berklee, my classes during the day, and then staying up all night working on the animation. And मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब होनी शुरू हो गई थी. So I had a choice. I could either drop out and focus on this full-time or keep living this crazy routine. And I made the choice to drop out. And my parents again were like, oh God, you're doing this again. Chalo, just give it your best. You weren't married at that time. I was married.
Oh. So everybody was afraid. I was afraid. मैं Dino को कल बता रहा था, we were talking about this. मेरे हाथ कांप रहे थे when I gave the papers to the admissions office that I'm dropping out. But then I dropped out and never looked back. Your wife agreed with the decision? She was supportive. She was. She said, because she saw everything happening behind the scenes. And so did my parents, and of course my cousin Khizr. They felt like this was the right thing to do. Wasn't the best thing to do in terms of optics, but in terms of progressing the project forward, it was the right decision. Speaking of right decision, you keep talking about this person, Dino. It's very rare that we have two people over here, but since he's from Morocco and he's a dancer, we've especially made an exception. Please welcome Dino the dancer. He's such a cute boy. You know, I really like Pakistan. Handsome men, you know, very nice. I like it here. I sounded drunk, by the way. Like, when they were Bollywood was telling you that would you happy to do that? I think he needs no introduction. By far, one of the most biggest names in radio, VJing and hosting. Dino, a very dear old friend of mine. He's here. आपका मैंने अलग से भी podcast करने पाया. You're just here for the Glassworker. So we're not going to talk about the size of your manhood. We're going to talk about Glasswork. But sir, please. मैं बड़ा serious रहना चाहता हूँ. But sir, this is a very serious film. बच्चा traumatized हो गया. Anti-war film बड़ी serious film है यार ये. Anti-war film. तो Dino serious है इसमें आप क्या करें? No, actually no. It's such a. मैं आपको honestly बताऊँ, but sir, I mean, आपसे you're like family to me. I love you. There's no secret. Everybody knows. Yeah, man. तो मैं आपसे सच बताऊंगा. I'm so grateful to Usman. He's been such an amazing. बड़ा rare होता है कि you find a captain of the ship. आपने भी कितने directors के साथ, कितने लोगों के साथ काम किया. Yeah. It's so rare to find someone who gives you the same amount of respect to every single cast member, and he gives you an opportunity जो कि जहाँ पे he lets you do what you want, you know, and lets you enjoy the creative process. और मुझे तो बड़ा मजा आया इस पूरे process. Usman और आप, you go way back. We do go way back. So I met Usman when he was very young. He was in his teens. And ये आए MTV. अभी बहुत बातें कर रहे हैं. ये उस टाइम पे एक बंदा गिटार का केस लेकर. नहीं, मुझे याद है. I think I saw you 8 to 10 years ago. And Ghazanfar साहब के आसपास ही मैंने आपको पीना. And he didn't talk at all. उस टाइम पे ये गिटार बजाता था. सिर्फ गिटार बजाता था. That was his way of talking to people. Yeah. So now he's mashallah, you know, he's obviously done so much since then. So I've known him for a long time. तो मुझे हमारी बातचीत होती रहती थी ग्लासवर्कर के बारे में, कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है. जब भी कोई खबर आती थी तो मैं, you know, I'd congratulate him on his success and all of that. तो we are good friends. But ये जो पूरा सिलसिला हुआ, ये पिछले साल ये हुआ कि he was kind enough to surprise me with an opportunity कि यार मैं सोच रहा हूँ कि आप इसमें, वो भी बड़ा मजेदार तरीका था, भाई का तरीका भी बड़ा मजेदार है. आपने इनको कास्ट किया? Yes. काउच पे? यार बट साहब इंडस्ट्री सीक्रेट बताने की जरूरत नहीं है. भाई देखें मेरा काम है, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ. तो let's talk about the cast, because cast इसमें काफी मजेदार है. You have the Safarshi Moru. Yes. Okay. And then you have family burden, Dino. फिर इसके बाद how did you go about choosing people? क्योंकि उर्दू cast is completely different from the English cast, है ना? English cast was recorded in the UK with David Friedman. उन्होंने बहुत सारी Studio Ghibli films को भी dub की है. Okay. So I knew we were in good hands. So we worked with Art Malik, Sasha Dhawan, Anjali Mohindra. Yeah. Great How did actors. you get those people, man? It's a miracle. I honestly don't know how we got to work with such incredible people. Yeah. So there was a added pressure that for the Urdu version, we have to really get this right. Casting तक funding आ चुकी हुई थी कि अच्छा now we need these people. Yes. And all that. Alhamdulillah. The casting तक funding आ चुकी थी, and we got to work with amazing Hollywood talent for the English version. और फिर Urdu version पे, because the film started as an Urdu project. Yeah. And then when the international talent came on board, it was becoming difficult to manage the production. So we shifted gears midway and just focused on the English version. But as soon as the film finished,
we came back to the Urdu version and started refining it. और localization मैंने खुद लिप की मूवमेंट उर्दू की डिफरेंट है, इंग्लिश की डिफरेंट है? It's the इंग्लिश same. और उर्दू की दोनों की एक ही लिप मूवमेंट है. और अंग्रेजी में भी we had to fit certain actors' performances were different, so to fit the lip movement for the pre-existing voices. क्योंकि एनिमेशन में scratch recording करते हैं पहले, because even before you have your actors, you have a rough version of the voice acting to kind of get everything going and get the animation process started. So the process for both the Urdu and the English version dubbing was exactly the same. Now what happened with the Urdu version is Mariam and I had done the scratch voices for the English version. But Mariam, क्या बता रहे हो? so Mariam was always meant to voice the Ali's character in the Urdu version, so we did that. And then I always wanted to work with Khalid Anam, Khalifa Sajiruddin, Faiza Qazi, Dino. Aisha Sheikh, and Dino and Muru. I had always wanted them for these particular characters. Muru did the lead. Muru did Vincent when he's older. अच्छा. And we got a wonderful actor to come in to do the younger Vincent, which is Maham Muazzam. तो उनकी आवाज़ें मिलती थी और उनके जो accent है और जो inflection थी, there was similarity in those, so it felt believable. Even for the English version, Sasha Dhawan voiced Vincent in his older years, and there was this amazing actress Teresa Gallagher, who does a lot of dubbing again for the Ghibli films and has worked with David Friedman. She did the young Vincent. Dino, you've had mic experience all your life, ठीक है ना? It's very comfortable कि आप radio जब कर रहे होते हैं and hosting कर रहे होते हैं, तो you find yourself in that imaginary environment always. So shifting gears to जब film and working under certain direction कि नहीं यार ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए. Was it natural? हाँ, काफी natural था. अब रेडियो really helped, क्योंकि रेडियो पे हम इतना बोलते हैं एक्सटेम्पो, और क्योंकि कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, तो आपको एक वैसी इमेजिनरी वर्ड बनानी होती है बिल्कुल, कि भाई ये है, और डिस्क्राइब करनी होती है चीज़ें, तो उससे बड़ा फर्क पड़ा. फिर ऑब्वियसली वॉइस एक्टिंग मैंने की भी है, बट बहुत छोटी छोटी चीज़ें. बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज डूइंग अ फुल ऑन कैरेक्टर, और एक कैरेक्टर पूरा करना था. और मेरे लिए तो थोड़ा एडेड प्रेशर ये भी था कि मैंने, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि विंसेंट का कैरेक्टर मूरो ने किया, जो अडल्ट विंसेंट है, और जो बच्चा विंसेंट है वो एक माहम ने किया. मेरा ये था कि मुझे मलिक की पूरी जर्नी दिखानी थी, फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड. So I had to voice a child also. I had to voice a teenager also. अच्छा, child के लिए भी Dino did it. So I had to voice the whole thing. तो मुझे थोड़ा सा था कि थोड़ा सा वो एक एलिमेंट था कि जहाँ पे मुझे थोड़ा सा कि मैं कैसे, क्योंकि मेरी आवाज़ बड़ी डिस्टिंक्टिव है, तो I had to really work hard to make it different. डायलेक्ट के ऊपर भी कोई काम हुआ था कि यार अच्छा डायलेक्ट मतलब उसका वोली टोन ना है? हाँ, मतलब हमने कोशिश ये की थी कि वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन सही हो, लेकिन ये था कि उस्मान has mentioned this before कि हम लोगों ने जो लैंग्वेज रखी है इस फिल्म की, वो बड़ी कॉमन एवरीडे लैंग्वेज है. कि मतलब कि ऐसी सलीस उर्दू नहीं है कि आप फिल्म देखने जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि अगले क्या कह रहे हैं. तो वो बड़ी जिस तरह एवरीडे नॉर्मल उर्दू, जिस तरह आप और मैं बात करें, उस तरह की उर्दू है. और बस थोड़ी रिफाइंड है कि मतलब कि क्योंकि डायलॉग्स हैं और क्योंकि एक ग्रैंड विजन है, तो उस हिसाब से. बट उर्दू की लैंग्वेज हमारी इस फिल्म में जो है बड़ी कॉमन एवरीडे. वो कौन सा टाइम था जब आपने पूरी फिल्म एक गो में देखी? बिकॉज जब आप वॉइस ओवर कर रहे थे आपको सिर्फ आपके सीन्स ही मिल रहे होते हैं कि अच्छा यार ये कर मुझे नहीं पता था, कख भी नहीं पता लगता सर पैर क्या हो रहा है, ऑल दैट. नहीं, मैंने पूरी फिल्म देखी थी अंग्रेजी में पहले. सो आई टेल यू द स्टोरी हाउ आई वाज कास्टेड. उस्मान भाई का तरीका बड़ा मजे का था. मुझे और मूरो दोनों का आई थिंक इसी तरह का था. वी वर टुगेदर. तो मूरो उन्होंने हमें बुलाया कि भाई मैंने अंग्रेजी फिल्म तैयार कर ली है, अंग्रेजी फिल्म रेडी है, आप आके देख लें. आ गए हम, ज़ाहिर एक्साइटेड थे, हम पहुंच गए, हमने फिल्म देखी. ज़ाहिर मैं और मूरो जो है हमारी हालत ख़राब, हम एक दूसरे को देख के रोना शुरू हो गए, और हमने इनको गले लगाया. हमने कहा ये क्या बना दिया, कराची में बनी है पूरी फिल्म, पाकिस्तान में बनी है, क्या हो गया. बड़ा हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है जब आप किसी को आपसे ज्यादा क्रिएटिव को मिलते हैं ना, आप कहते हैं यही हालत थी. मैं और मूरो एक दूसरे को देख रही, पहले तो हमें यकीन नहीं आया कि पाकिस्तान में बनी है ये, जिस तरह बाकियों को भी यकीन नहीं आ रहा जो फिल्म देख रहे हैं. तो हमें नहीं पता था उस टाइम पे, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि आई वाज गोइंग टू बी कास्टेड और आई वाज बीइंग कंसिडर्ड टू बी कास्टेड. तो मुझे याद है जब मैंने फिल्म देख ली, मैं गाड़ी में बैठा, मैं रास्ते में था, मुझे अभी भी याद है, मैं एटीएम सिनेमा से निकला सदर, और मैं क्लिफ्टन ब्रिज क्रॉस कर रहा हूँ. इनका मुझे मैसेज आया, और उन्होंने मुझे कहा कि भाई आई एम थिंकिंग कि इसमें जो मलिक का कैरेक्टर है वो मैं चाह रहा हूँ आप करें. और क्योंकि मेरे बचपन का ख्वाब है to work in a Japanese anime styled anything. So not yeah.
वो बहुत creative है, वो मैं नहीं But when he messaged me, I immediately said yes. I said, whatever you want, जो भी आपका character है, जो आप बोलेंगे, I'll do it. And he knew I meant it. So when I came to the studio, I was so lucky कि उन्होंने कहा कि आपने भाई तीनों इसके generation दिखानी है और ये करना है, and बड़ा मजे का process था. और I think Muro का भी इसी तरह का. Yeah. Muro was also, I don't think he knew at least. So किसी भी टैलेंट ने आपको तंग नहीं किया? नहीं. ये कैसे हो सकता है? कैसे? ये तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री. ये पाकिस्तानी इंडस्ट्री है. बेबी मेरी आज तबीयत खराब है, मैं नहीं आ रही. 6 बजे का कॉल टाइम है, बंदा 12 बजे आ रहा है. ये किसी ने भी नहीं किया. अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने भी नहीं किया. Everyone was extremely professional, I think. अल्लाह करे तू फिल्म बना तुझे पता लगे. नहीं, वॉइस एक्टिंग में we just had to finalize a schedule. और फिर हमने सबकी schedule के मुताबिक अपनी schedule बनाई थी. So everyone was available. We worked with them on their dates. He gave everyone each day. Yeah. कि like पूरा दिन आप दे रहे हैं, आप पूरे दिन उस पे काम. और हमने अंग्रेजी voice ADR sessions के लिए यही किया था. So I learned a lot from David Friedman and then applied it here in Pakistan when we were doing the voices. I voice directed it और फिर localization मैं और तनवीर आफरीदी और खिजर और मरीम ने हमने पूरी script को localize किया था. We didn't do a direct translation. Though a lot of the things that are different in the English version, I think they're two different versions of the movie. जियो ने आप लोगों का किया हुआ है मीडिया कोलैबोरेशन. यहाँ सारी जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो जियो के पास है ना? Jio is our presenting partner and our distributor is Mandviwala Entertainment. Alright, Mandviwala साहब. और उनके साथ मैंने उनको 2015 में बताया था कि मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ. I was 1 year into the project and him and I were staying with a family member in New York. और वो छत पे सिगरेट पी रहे थे. It was winter, it was I think November. और मैं उनके साथ छत पे खड़ा हुआ था and I... तू सिगरेट नहीं पी रहा था? नहीं, मैं बस उनकी बातें सुन रहा था. और and he was talking about his love for cinema and I was talking about my love for animation and I told him there कि sir जब ये movie खत्म होगी I want you to distribute it in Pakistan. And what did he say? And he said, at that time, he said, Inshallah, absolutely. But none of us knew it would take 9 years after that to get to that point. But when it happened, when the film was finished, I called him and said, sir, the film is done and we're ready to distribute it with you in Pakistan. And he said, what did he say then? Then he said, are you sure you don't want to take it back? I said, not for a second. क्या तो भाई देखिए ये होती है कमिटमेंट होती है. वेरी नाइस है. इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि कौन सा ऐसा पॉइंट आया था कि जहां हमको लगा कि शिट मेड अ मिस्टेक. I think the worst point was when COVID happened. क्योंकि फिर हमारी जो पूरी जो एक schedule थी that was thrown out the window because for a month we had to shut down. मैं स्टोरी बोर्ड्स बना रहा था उस वक्त, तो मैं घर पे बैठ के फिर भी प्रोडक्शन कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन हम एनिमेशन का और बैकग्राउंड का काम नहीं कर पा रहे थे. Okay. And we had to figure out how to manage our time effectively. We didn't have any understanding of COVID in the early stages. So what we did was we divided the team into 2 batches with one half of the team coming every alternate day. So it became a 6-day work week. And at that point, funding bhi nahi thi. And it was very difficult. And at that point, I sat down and said, why is this happening? What is going on? Ye bahut mushkil hai. Will I ever get to finish this? That was the lowest period, but we worked through it and powered through it. And here we are now. But it's still very surreal for me to sit here and talk about the movie like it's a finished product. क्योंकि 10 साल से मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ. हाँ नहीं, अभी बेफिक्र है, तुझे डिप्रेशन होगा अभी थोड़ी देर बाद. डिप्रेशन तो शुरू हो गया है कि खत्म हो गई. क्योंकि आर्टिस्ट बंदे के साथ पता है मसला क्या होता है. You constantly need change. You constantly need to be uncomfortable. Yeah. जहाँ आप comfort level आना शुरू हो जाता है ना, that's where the depression starts kicking in. ये क्या मतलब? So don't worry. You find yourself a new project. Maybe a Moroccan dancer film or something like that. मैं तो already practice कर रहा हूँ, आपको पता है कि मैं तो तैयार हूँ जितना आप बोले. अच्छा जी, थोड़े से हमारे excuse me सवाल होते हैं, तो करना ज़रूरी होते हैं, ठीक है? आप दोनों से होंगे, आप दोनों में से. Oh, is this the rapid fire thing? नहीं, हम rapid fire नहीं. What is this? This is the thing. Excuse me. This is the thing. This is not the thing. It's the thing. It's not the thing. I know what thing this is. Your thing is smaller. This is the सवाल of the जो आप देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो ना दें, ठीक है? एक चीज़ जो मैं कभी नहीं करूँगा आप दोनों से. I will skinny dipping.
कभी नहीं करूँगा. हाँ ना करी. ओके उस्मान ने तो बड़ा नॉर्मल आंसर दिया. मैं कलेजी नहीं खाऊंगा. I don't like कलेजी. I'm not a fan of कलेजी. क्या कलेजी बात की है तूने? No, I don't like कलेजी. You asked me what I would never do. I won't do it. कलेजी नहीं खाएगा. गाली खा लेगा, कलेजी नहीं खाएगा. ओके, एक चीज जो शायद जिंदगी में मैं कभी ट्राई करना चाहता हूँ. Skydiving. I was going to say skydiving. Skydiving? No, skydiving. Yes. We'll do it together. Yes. We'll celebrate जब film जो है. We should do that. When the film crosses 50 crores, we'll do it. Oh, Sure. ओके, मैं क्या शायद कलेजी का है. मैं कलेजी ट्राई करूँगा. अच्छा जी, एक आर्टिस्ट जिसके साथ मैं काम करना चाहता हूँ. जिसके साथ मैं काम करना चाहता हूँ. Anywhere, कहीं पे भी, like any industry. अपार्ट फ्रॉम एडल्ट इंडस्ट्री, Oh, okay. उसके साथ आप कर सकते हो. I would love to work with Christopher Nolan. अगर मुझे कभी I would yeah. अगर हम इस तरह बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, I would say I would love to work with Shay Gill. I'm a huge fan of Shay Gill. हाँ, Shay, yeah, she's nice. Very good singer. Yeah. I really like her. And Usman? I was actually thinking this while we were doing the interview. I'd love to work with you. Voice acting, inshallah. Yes. Yes. What's up? And that Legend. actually. Yeah, legend. Inshallah. He's a legend. भाईजान ये कल ही लगेगा. कल ही लगेगा. एडिट करो. अभी edit करो. अभी एडिट करो इसको. एक फिल्म that left a very impactful memory. The Wind Rises. Hayao Miyazaki की फिल्म जो 2013 में आई थी. That's the film that made me get up and say मुझे भी animation करनी है. Because specifically उसमें जो Jiro Horikoshi की journey है, they're making their airplanes in rural Japan, and there's a scene where ox carts are dragging the plane out into the testing field, and one of the characters is complaining that Germany is so far ahead of us technologically, America is so far ahead of us technologically, Japan won't be able to do anything. And I saw that and was like, that's us in hand-drawn animation. And if they can do it, we can do it. I know कि cartoon है. I know that Miyazaki changed a lot of things because he took artistic license with the story. But the sentiment, तो उसको देख के मैंने कहा मैं भी ये करूँगा. Have you watched this animation that just came out? Scavenger's Hunt. नहीं हमने देखी है. It's amazing. Is it on Netflix? I think it's on Hulu. It's on Hulu. I'll check it out. But by far वो जो नहीं आते अक्सर reels आ जाती हैं, the most creative animations और ये वो this and that. So I think it's called Scavenger's Reign. Scavenger's Reign. Scavenger's Reign, and it's a very Eon Flux modern animation style. Very cool. And I was blown away. 8 episodes, and the storytelling, the character development, it was just like, अगर आपने नहीं देखी हुई, go watch it. It's mind blowing. कमाल की है. I'm going to check it out. आपकी कौन सी? Up. अगर animation की बात करें, I think Up was the movie that really like बहुत मतलब अच्छी film. खूबसूरत soundtrack, उसका especially जो उसका theme song है is one of my favorite theme songs. With that piano piece. Oh, it makes you cry, man. Yeah. पाकिस्तानी सिनेमा को किस चीज़ की सख्त ज़रूरत है? पाकिस्तानी cinemas को किस चीज़ की सख्त ज़रूरत है? More cinemas. Currently, I think there are only 53, 54 screens in the whole country. I would like to see more multiplexes and cinema houses. I know it's a very difficult business and a difficult business model, but it would be amazing अगर थोड़े से और cinema हो इस मुल्क में, ताकि it incentivizes people कि हमारी movie लगेगी. Hopefully more people will go watch films, making it more accessible. क्योंकि इंडिया में तो हर जगह है, and obviously their film industry is like incredible. Bollywood is an institution. I would say better storytelling. I feel like we still मुझे लगता है अभी भी हम प्ले सेफ बड़ा करते हैं. अब जैसे मैंने कल रात टेलीविजन लगाया हुआ था, तो मैं देख रहा था कि टेलीविजन इंडस्ट्री के ड्रामों में मैं 1 घंटे से लगा हुआ था टेलीविजन, और मैं सिर्फ देख रहा था कि इट्स द सेम स्टोरी, different episode of a different drama, but the same, it seemed like a one drama. And it was kind of like, it hit me, we actually we haven't progressed. I feel like a better story. नहीं, but dramas are doing wonderful. Well, अगर आप देखें मैं बताऊं, सब कुछ ड्रामे आ जाते हैं from time to time. Storytelling वाकई बहुत अच्छी होती है. जैसे recently I saw Gentleman. I really like Gentleman. I thought it was great.
तो उस तरह के कुछ ऐसे ड्रामे आते हैं जो फ्रॉम टाइम टू टाइम जिनकी अच्छी स्टोरी टेलिंग होती है, अच्छे लिखे हुए होते हैं, डायलॉग्स अच्छे होते हैं, एक्टिंग करने का हमारे स्टार्स को एक्चुअली मौका मिलता है टू शो हाउ गुड दे आर. But majority of the time, it's just literally like factories, just churning out. Film, I feel like that we still have a long way to go when it comes to storytelling. एक आदत जो मेरी सबसे बुरी है. I love you, so I don't think मुझे तो आपकी कोई आदत ऐसी बुरी नहीं लगती. मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ. मैंने तो अभी तक नहीं आप अपनी बताओ. मैं अपनी बता. Yes. अच्छा मैं आपकी तारीफ करूँ. नहीं आप अपनी बताएं. लियोनार्डो डिकैप्रियो वाली हरकत जो आप करते हैं. क्या? नहीं. Everybody knows. No, what is up? Nobody knows. You know. Don't need to tell others. Okay, no. एक हरकत जो मैं करता हूँ, क्या सवाल? एक आदत मेरी अपनी जो मुझे बहुत बुरी लगती है. I'm a massive procrastinator. मुझे लगता है कि मुझे जरा मेहनत और करनी चाहिए. I procrastinate a lot. Okay, sir आप. I would say I'm the opposite. I'm always doing things and I need to slow down. Yeah. You need to take a break, man. Yeah. You need to chill. अगर कभी मौका मिले तो किस पॉलिटिशियन के ऊपर एनिमेशन फिल्म बनाना चाहो? Oh God, I am so not भाईजान ए सिंधी ये वाला आ गया. तो आएगा वापस. Loaded question है. हमने घर भी जाना है भाई. Yes. नहीं अगर भैया हमारे एक मिनट हमारे पास कायदे आज़म पे फिल्म बनाएंगे. That is a good answer. Yeah. I'll go with that answer. Yeah. Very nice. कायदे आज़म बड़ी मज़ेदार बनेगी. Yes. The whole journey. I think that's a fantastic idea. Actually, you know, not a politician, but I would love to see a movie made on Edie Saab's life. Yeah. I think he's a real life superhero. I would love to see someone make a story of it. Great man. Because हमने उनकी later years की तो बहुत कहानियां सुनी, but मैंने कुछ लोगों से उनकी जवानी भी कहानियां सुनी है. And what a man. So I would love to see someone make a story of it, even in animation. Yeah. एक scene Glassworker का जो I would love to redo. See, that's a difficult question because मैंने इतने सालों से देखा है. मैं अपने कप्तान से पूछता हूँ क्या कहते हैं. फिल्म में बहुत सारी चीजें हैं that I would like to do better, but I've said this a version of this answer many times, which is I think given the circumstances that we had, we made the best possible film we could. Technicalities में अगर मैं घुसूंगा तो अगर drawing count में थोड़ी सी बढ़ा सकता था in certain shots and areas, I would have loved to do that, but budgetary constraints and time constraints didn't allow us. But now it's a complete piece, so I just look at it like a time capsule. कि इस वक्त में हमने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई और जो सारी चीज़ें मैंने उस फिल्म में सीखी हैं, I will make the next one better, inshallah. One thing I want to unlearn. One thing I want to unlearn. I would love to unlearn the pressures of this industry. I feel like this industry की That's a great answer. Yeah, I think कि industry में जितना time आप गुजारते रहते हैं, I feel like कि आपकी जो एक innocence, naive जो एक feeling होती है, आप start करते हैं, वो with time you lose that and you get so caught up in the politics और इन चीज़ों में आप इतना घुस जाते हैं और you know किससे किस तरह से बात करनी, किस तरह से चीज़ें करनी है, क्या करनी, तो आप अपनी creativity आपकी थोड़ी back end पे चले जाती है. So I would like to unlearn. Yeah, you because वही होता है कि the more you stay in the business, the more you realize the politics. Yeah, you it's need a to know the business, politics. You know? I feel like I miss that innocent, naive thought process. Ke, oh, this is all fun. That's a great answer. I try to hold on. Because like even when we started this project, the naivety is a big reason why I was able to do it. Because had I known, शुरू में अगर मुझे पता होता कि इसमें 10 साल लगेंगे, and not just like days of work, days and nights of work, and the people I maybe would have been afraid. Yeah. So now that I know it, I'm always thinking about the next project. Like I just don't want to do it like how we did the Glassworker. So great answer. It's a great answer. I can't even top that. I don't know what to say. What I would like to unlearn. I think he's right because I think you आपने जो जिस तरह के लोगों से भी मिले हो, I mean positive लोगों से मुलाकात की. अच्छा हाँ, किसी ने ना कही थी इस प्रोजेक्ट के लिए? बताए. There are 1,000 no's before someone said yes. वही कहानी जो सब बोलते हैं अपनी कहानी फिल्मों के बारे में, किताबों के बारे में, rejection, then a yes and then rejection. Even cast maybe. Cast में नहीं, but more in terms of like financiers, film festivals, the business side of it. मुझे एक बात बताई थी which I thought was like for a creative person that's hard to hear. I remember when he went to a studio or something to show his hand-drawn animation thing, and they said कि आप ये क्यों कर रहे हैं, हम ये देखें एक क्लिक में इसकी शर्ट जो है लाल से पीली कर देते हैं, आप हाथ से बना रहे हैं,
You know what I mean? So it's such Yeah. मतलब for that person to say it's a very casual comment. Yeah. Again, I'm sure for you must have been like यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ हाँ. समझ क्यों नहीं रहा कि मैं क्या कर भाई इस तरह तो देखें जो लोग स्टॉप मोशन एनिमेशन पे फिल्में बनाते हैं वेस एंडरसन डज दैट अ लॉट Yeah. एंड वो हर 2 साल बाद एक स्टॉप मोशन एनिमेशन निकालता है like why but that's an art, That's enough. Yeah. that's an art form and he loves that. Yep. So same goes He was at Annecy this year where our film. he was Yeah. we are He's an amazing man. नहीं और अब ये जापान जा रहे हैं भाई. Yes. I just want to say everyone कि this is such a big thing WhatsApp कि Japanese style की animation करके उन्हीं के मुल्क में जाके हम अपनी फिल्म दिखा रहे हैं क्या बात. और फिर मतलब कि वो देखेंगे मैं I'm just like it blows my mind. Yeah. ये वही बात होगी ना कि कोई पाकिस्तानी जापान में पैदा हुआ और वो जापान में दाल गोश्त उसने बनाया और वो वहां से उठ के यहाँ आ रहा है और वो लाहौर आ रहे भाई मैं तुम्हें दाल गोश्त बना के बताता हूँ कैसे. अच्छा जी what I want my legacy to be. That I was a good person. अच्छा मैं डांसर कहना. बट तब मुझे बहुत टाइम लगेगा. मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ. मैं मोरक्कन डांसर. बड़ी मेहनत कर रहा हूँ. इंशाल्लाह एक दिन मैं अच्छा डांसर बनूंगा. आप देखिएगा. You आऊंगा मैं. You. Oh नहीं but seriously what do you want your legacy to That I was a good person to deal with. I feel like a lot of you are alhamdulillah. I thank you. I love you. Yeah, you're amazing. I just that's the only thing I work hard on more than anything else. कि यार जिससे भी मिलूं कोई issues ना हो. I get very disturbed by that. What would I like my legacy to be? Someone who pushed the boundaries of what people thought was possible. Solid. That's a good answer. तो ठीक है भाईजान इतना ही मैं आपको टाइम दे सकता हूँ. Thank you. Thank you for having But us. Thank you. no seriousyears ago I saw you. I was like पता नहीं कौन सा चर्सी बॉय आ गया बेचारा करके बैठा होता. I didn't know you back then, so obviously बात है. But seeing your journey and like I said in the intro, there's a price to pay if you're a genius, and mashallah, your work speaks volume. And your creativity, your journey is just a start. And I see you going a long way. Inshallah. Thank you so much. And working with the likes of Dino, working with the likes of whatever his name is. यार वो मेरे पॉडकास्ट पे नहीं बता है ना. Samuru. I love that guy. He's a creative. He's a creative force. Genius है अपने अंदर. Sir, वो बहुत creative इंसान है. So having said that, I am going to see the movie. अजान के साथ मैंने अब जाके देखनी है और मैं उसको कन्विंस करूंगा मेरे को पाकिस्तानी है. But I would love to interview you after 2 years, see where you are headed now, and hopefully अगली फिल्म 2-3 साल के अंदर आ जाएगी. इंशाल्लाह. अभी छोटी सी ब्रेक लूंगा. अब जो दूसरी फिल्म है उस पर काम मैंने तो शुरू कर लिया. But I need to get my energy back to take on this monumental task again. But inshallah. आप holiday destinations की please इनको आप suggestion. Bangkok. आई स्वाति खान. उससे बेहतर और क्या डेस्टिनेशन हो सकता है. बट ख़वातीन और हज़रात, थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखें. हमारे गेस्ट का शुक्रिया कि वो अपना कीमती वक्त निकालते हैं और इतना सीरियस ना हुआ करें कमेंट्स में. लर्न टू एंजॉय, लर्न टू अनलर्न थिंग्स. थैंक यू. पाकिस्तान जिंदाबाद.